connected to 6B77382D.
Arahan Samma Sambuddho Sakkato Ena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantang Sadhammang Sasangang Ime Sakare Iyatarahan Aropitehi Avipuyama Sadhuno Bhante Bhagava Suchira Parinibhutopi Pachima Janata Ime Sakare Dugata Panaka Bhute Patiganatun Nigratam Nitaya Sukhaya Arihant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Avivademi Bhagavata Dhammo Sami Sangho Sanghang Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Punnanusati mayam karomasi Bhagavantang evang kalyano kiti saddho abhuggato iti piso bhagava arahan samma sambuddho vidya sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasa satta deva manussana buddho bhagavati Andamayam buddha vikitim karomasi Buddhavarahanta diguna bhiyuto yuddha vinyana karuna visamagatato dodesiyo sujanatang kamalang vasuro vandamiham Vandam aham tamaranam Sirsajinendam Buddhoyo Sabbapaninam Charanam Khemamuttamam Patamanusatittanam Vandamitam sivinam Buddhasasmidasova Buddho me sami kissaro Buddhasam niyademi sariran jivitan chedam Vandantoham charisam Buddhaseva subodhitam Yati me saranam anyam Buddho me saranam varam Etena satya vajjena Vaddheyam sattu sasane
buddhaṃ me vandamanena yam punyam pasutam ida sabbepi antarayami mahesum tasya tejasa कायेन वाचा चेतसा बुद्धि कुम्म पकट बंधो पटिगनाथ उच्चैन कालांतरे समय आनंदमयं धम्मानुसति नयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पच्चत्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहीति आनंदमयं धम्माभिगीतिं करोमसि स्वाखाततादिगुण योगवसेन सेयो यो मार्गपाकपर्यतिविमोक्षभेदो धम्मोऽकुलोकपठन तददारिदारि वन्दाम्यहं तमरं शरदम्ममेतं वन्मोयो सब्बपाणिनं शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिठानं वन्दामि तं शिरेणं धम्मस्मि दासीव धम्मोऽमि सामिकेश्वरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुतं मतम् नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानाय यं पुण्यं प्रसुतं इदं सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा चेतसा धम्मैको कुम्मं पकटमय धम्मो पटिगनाथ कालांतरे समर्थितम् आनंदमयं संघानुसतिमयं करोमसि अन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुङ्गला येष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुने दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनन्तरं पुण्यकृतं लोकसाति आनंदमयं संघाभिगीतिं करोमसि सधम्मजो सुपटिपत्तिगुणादियुतो यो अष्टविधो हरिपुङ्गलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरसयकाय चित्तो वन्दामहं तमरिया गणं सुशुद्धं सम्भूयो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणं
Sanghasasmi daso Sangho me samikissaro Sanghasaham niyademi Sariran jivitan chidang Vandantoham charissa Sanghasya upatipannatam Nati me saranam Anyam Angomi saranam varam Tena Satya Vajjena Vaddeyam Sattu sasane Sangham me vandamanena Yam punyam pasutam ida Sabbepi antarayam Mahesum tasya tejasa Kain vachya vachitsa Sanghe kukamam paktamaya Sangho patiganatvachi Bhalantare samvaritam sanghe. हम जय मंगल अट्ठ गाथा का पाठ करेंगे. बाहुं सहस्रमहीत सायुधन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससेनमारं दानादिदं विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि Tam te yathavantu te Jaya mangalani मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरतिं घोरं पनालवकमक्ख मतद्धयखम् अन्ते सुदन्त विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भुवतु ते जयमङ्गलानि Tam te yathavantu te Jaya mangalani नालागिरि गजवरम् अतिमत्तभूतं दावर्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तम् मेत्तं भुसेक विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उक्थितखड्गमतिहत्थ सुदारुणन्तम् धावन्ति योजन पतङ्गुलिमालवन्तम् सिद्धिविसङ्खत मनोजितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि Tam te yathavantu te Jaya mangalani कत्वानुकट्ठ मुदरम् इव गद्धिनीया चिञ्चाय दुःखवचनं जनकाय मज्जे सन्तेन सोमविधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
भाति अन्धभूतम् पञ्ज्ञापदीप जलितो जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विभुदं महीब्धिं पुत्रेण थेरभुजगेन गमापयन्तो इद्धूपदेश विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुःखादिद्धि भुजगेन सुदक्षहत्थम् ब्रह्मं विशुद्धि ज्युतिमेद्धि बकाभिधानम् याणागदेन विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि ये तापि बुद्ध जयमङ्गल अट्ठगाथा यो वाचको दिने दिने सरते मतन्ति हित्वाननेक विविधानि चुपद्धवानि मोक्षं सुखम् अधिगमेय नरो सपञ्यो We'll now hear Desana by Ajahn Chah. Called Detachment within Activity. This is the 26th reading, and it's entitled Detachment Within Activity. And this was originally published for the one that was produced for the time of Ajahn Chah's funeral by Bruce Evans, Puriso, Ajahn Puriso as he was there. The 26th reading, and it's entitled Detachment Within Activity. And this was originally published in the book Food for the Heart, the one that was produced for the time of Ajahn Chah's funeral. So this was translated by Bruce Evans, Puriso, Ajahn Puriso as he was then.
And it says, this was given at Wat Bapong during the Rains Retreat of 1977, and this talk was published elsewhere under the title Samma Samadhi, Detachment Within Activity. This is the 26th talk. Detachment within activity. Take a look at the example of the Buddha. Both in his own practice and in his methods for teaching the disciples, he was exemplary. The Buddha taught that standards of practice are skillful means for getting rid of conceit. He couldn't do the practice for us. Having heard that teaching, we must further teach ourselves, practice for ourselves. The results will arise here, not at the teaching. The Buddha's teaching can only enable us to get an initial understanding of the Dhamma. But the Dhamma is not yet within our hearts. Why not? Because we haven't yet practiced. We haven't yet taught ourselves. The Dhamma arises within the practice. If you know it through the practice. If you doubt it in the practice. The teachings from the masters may be true, but simply listening to Dhamma is not yet enough to enable us to realize it. The teaching simply points out the way to realizing the Dhamma. To realize the Dhamma, we must take that teaching and bring it into our hearts. That part which is for the body, we apply to the body. And that part which is for speech, we apply to speech. And that part which is for the mind, we apply to the mind. This means that after hearing the teaching, we must further teach ourselves to know that Dhamma, to be that Dhamma. The Buddha said that those who simply believe others are not truly wise. A wise person practices until he's one with the Dhamma, until he can have confidence in himself, independent of others. On one occasion, while Venerable Sariputta was sitting at the Buddha's feet, listening respectfully as the Buddha expounded the Dhamma, the Buddha turned to him and asked, "Sariputta, do you believe this teaching?" Venerable Sariputta replied, "No, I don't yet believe it." Now, this is a good illustration. Venerable Sariputta listened, and he took note. When he said he didn't yet believe, he wasn't being careless. He was speaking the truth. He simply took note of that teaching because he'd not yet developed his own understanding of it. So he told the Buddha that he didn't yet believe, because he really didn't believe. These words almost sound as if Venerable Sariputta was being rude, but actually he wasn't. He spoke the truth, and the Buddha praised him for it. Good Sariputta. A wise person doesn't readily believe. He should consider first before believing. Conviction in a belief can take various forms. One form reasons according to Dhamma, while another form is contrary to the Dhamma. This second way is heedless. It's a foolhardy understanding, micca ditthi, wrong view. One doesn't listen to anybody else. Take the example of Diganaka the Brahmin. This Brahmin only believed himself, he wouldn't believe others. At one time when the Buddha was resting at Rajagaha, Diganaka went to listen to his teaching. Or you might say that Diganaka went to teach the Buddha because he was intent on expounding his own views. I am of the view that nothing suits me. This was his view. The Buddha listened to Diganaka's view and then answered, Brahmin, this view of yours doesn't suit you either. When the Buddha had answered in this way, Diganaka was stumped. He didn't know what to say. The Buddha explained it in many ways till the Brahmin understood. He stopped to reflect and saw, this view of mine isn't right. On hearing the Buddha's answer, the Brahmin abandoned his conceited views and immediately saw the truth. He changed right then and there, turning right around, just as one would invert one's hand. He praised the teaching of the Buddha thus. Listening to the Blessed One's teaching, my mind was illumined, just as one living in darkness might perceive light. My mind is like an overturned basin which has been uprighted, like a man who's been lost and who finds the way. Now at that time a certain knowledge arose within his mind.
within that mind which had been uprighted. Wrong view vanished and right view took its place. Darkness disappeared and light arose. The Buddha declared that the Brahmin Diganaka was one who had opened the Dhamma eye. Previously, Diganaka clung to his own views and had no intention of changing them. But when he heard the Buddha's teaching, his mind saw the truth. He saw that his clinging to those views was wrong. When the right understanding arose, he was able to perceive his previous understanding as mistaken. So he compared his experience with a person living in darkness who had found light. This is how it is. At that time, the Brahmin Diganaka transcended his wrong view. Now we must change in this way. Before we can give up defilements, we must change our perspective. We must begin to practice correctly and practice well. Previously, we didn't practice rightly or well, and yet we thought we were right and good just the same. When we really look into the matter, we upright ourselves. It's like turning over one's hand. This means that the one who knows, or wisdom, arises in the mind, so that it is able to see things anew. A new kind of awareness arises. Therefore, practitioners must develop this knowing, which we call Buddho, the one who knows, in their minds. Originally, the one who knows is not there. Our knowledge is not clear, not true or complete. This knowledge is therefore too weak to train the mind. But then the mind changes, or inverts, as a result of this awareness, called wisdom or insight, which exceeds our previous awareness. That previous one who knows did not yet know fully and was unable to bring us to our objective. The Buddha therefore taught to look within, opanayiko, literally leading inwards or worthy of realizing. Look within, don't look outwards. Or, if you look outwards, then look within to see the cause and effect therein. Look for the truth in all things, because external objects and internal objects are always affecting each other. Our practice is to develop a certain type of awareness until it becomes stronger than our previous awareness. This causes wisdom and insight to arise within the mind, enabling us to clearly know the workings of the mind, the language of the mind, and the ways and means of all the defilements. The Buddha, when he first left his home in search of liberation, was probably not really sure what to do, much like us. He tried many ways to develop his wisdom. He looked for teachers, such as Uddaka Ramaputta, to practice meditation. Right leg on left leg, right hand on left hand, body erect, eyes closed, letting go of everything until he was able to attain a high level of absorption, samadhi. But when he came out of that samadhi, his old thinking came up, and he would attach to it, just as before. Seeing this, he knew that wisdom had not yet arisen. His understanding had not yet penetrated to the truth. It was still incomplete, still lacking. Seeing this, he nonetheless gained some understanding that this was not yet the summation of practice. But he left that place to look for a new teacher. When the Buddha left his old teacher, he didn't condemn him. He did as the bee does. It takes nectar from the flower without damaging the petals. Then the Buddha proceeded to study with Alara Kalama and attained even higher states of samadhi. But when he came out of that state, Bimba and Rahula, his former wife and child, came back into his thoughts again. The old memories and feelings came up again. He still had lust and desire. Reflecting inward, he saw that he still hadn't reached his goal, so he left that teacher also. He listened to his teachers and did his best to follow their teachings. He continually reviewed the results of his practice. He didn't simply do things and then discard them for something else. Then, after trying ascetic practices, he realized that starving until one's almost a skeleton is simply a matter for the body. The body doesn't know anything. Practicing in that way was like executing an innocent person while ignoring the real thief. When the Buddha really looked into the matter, he saw that practice is not a concern of the body, it's a concern of the mind. The Buddha had tried attha kilamatanu yoga, self-mortification, and found that it was limited to the body. In fact, all Buddhas are enlightened in mind.
Whether in regard to the body or to the mind, just throw them all together as transient, imperfect and ownerless, anicang, dukkang and anatta. They are simply conditions of nature. They arise depending on supporting factors, they exist for a while and then cease. When there are appropriate conditions, they arise again. Having arisen, they exist for a while, then cease once more. These things are not a self, a being, an us, or a them. There's nobody there. There are simply feelings. Happiness has no intrinsic self. Suffering has no intrinsic self. No self can be found. There are simply elements of nature which arise, exist, and cease. They go through this constant cycle of change. All beings, including humans, tend to see the arising as themselves, the existence as themselves, and the cessation as themselves. Thus they cling to everything. They don't want things to be the way they are. They don't want them to be otherwise. For instance, having arisen, they don't want things to cease. Having experienced happiness, they don't want suffering. If suffering does arise, they want it to go away as quickly as possible. But it's even better if it doesn't arise at all. This is because they see this body and mind as themselves, or belonging to themselves, and so they demand that these things follow their wishes. This sort of thing is like building a dam or a dike without making an outlet to let the water through. The result is that the dam bursts. And so it is with this kind of thinking. The Buddha saw that thinking in this way is the cause of suffering. Seeing this cause, the Buddha gave it up. This is the noble truth of the cause of suffering. The truths of suffering, its cause, its cessation, and the way leading to that cessation, people are stuck right here. If people are to overcome their doubts, it's right at this point. Seeing that these things are simply rupa and nama, or corporeality and mentality, it becomes obvious that they're not a being, a person, an us or a them. They simply follow the laws of nature. Our practice is to know things in this way. We don't have the power to really control these things. We aren't really their owners. Trying to control them causes suffering, because they aren't really ours to control. Neither body nor mind are self or other. If we know this as it really is, then we see clearly. We see the truth. We're at one with it. It's like seeing a lump of red-hot iron which has been heated in a furnace. It's hot all over. Whether we touch it on top, on the bottom, or the sides, it's hot. No matter where we touch it, it's hot. This is how you should see things. Mostly when we start to practice, we want to attain, to achieve, to know and to see. But we don't yet know what it is that we're doing, what we're going to achieve or know. There was once a disciple of mine whose practice was plagued with confusion and doubts, but he kept practicing, and I kept instructing him, till he began to find some peace. But when he eventually became a bit calm, he got caught up in his doubts again, saying, "What do I do next?" There, the confusion arises again. He says he wants peace, but when he gets it, he doesn't want it. He asks what he should do next. So in this practice we must do everything with detachment. How are we to detach? We detach by seeing things clearly. Know the characteristics of the body and mind as they are. We meditate in order to find peace, but in doing so we see that which is not peaceful. This is because movement is the nature of the mind. When practicing samadhi, we fix our attention on the in-breath and the out-breath of the nose tip or the upper lip. This lifting the mind to fix it is called vitakka, or lifting up. When we have thus lifted the mind and are fixed on an object, this is called vichara, the contemplation of breath at the nose tip. This quality of vichara will naturally mingle with other mental sensations, and we may think that our mind is not still, that it won't calm down. But actually, this is simply the workings of vichara as it mingles with those sensations. Now, if this goes too far in the wrong direction, our mind will lose its collectedness. So then we must set up the mind afresh, lifting it up to the object of concentration with vitakka. As soon as we have thus established our attention,
vichara takes over, mingling with the various mental sensations. Now when we see this happening, our lack of understanding may lead us to wonder, why has my mind wandered? I wanted it to be still. Why isn't it still? This is practicing with attachment. Actually, the mind is simply following its nature, but we go and add on to that activity by wanting the mind to be still and thinking, why is it by wanting the mind to be still and thinking, why isn't it still? Aversion arises, and so we add that on to everything else, increasing our doubts, increasing our suffering, and increasing our confusion. So, if there is vichara, reflecting on the various happenings within the mind in this way, we should wisely consider, the mind is simply like this. There. That's the one who knows who's talking, telling you to see things as they are. The mind is simply like this. We let it go at that, and the mind becomes peaceful. When it's no longer centered, we bring up vitaka once more, and shortly there is calm again. Vitaka and vichara work together like this. We use vichara to contemplate the various sensations which arise. When vichara becomes gradually more scattered, we once again lift our attention with vitaka. The important thing here is that our practice at this point must be done with detachment. Seeing the process of vichara interacting with the mental sensations, we may think that the mind is confused and become averse to the process. This is the cause right here. We aren't happy simply because we want the mind to be still. This is the cause, wrong view. If we correct our view just a little, seeing this activity as simply the nature of mind, just this is enough to subdue the confusion. This is called letting go. Now if we don't attach, if we practice with letting go, detachment within activity, and activity within detachment, if we learn to practice like this, then vichara will naturally tend to have less and less to work with. If our mind ceases to be disturbed, then vichara will incline towards contemplating Dhamma, because if we don't contemplate Dhamma, the mind returns to distraction. So, there's vitaka then vichara, vitaka then vichara, vitaka then vichara, and so on, until vichara becomes gradually more subtle. At first, vichara goes all over the place. When we understand this as simply the natural activity of the mind, it won't bother us unless we attach to it. It's like flowing water. If we get obsessed with it, asking, why does it flow? Then naturally we suffer. If we understand that the water simply flows because that's its nature, then there's no suffering. Vichara is like this. There is vitaka then vichara, interacting with mental sensations. We can take these sensations as our object of meditation, calming the mind by noting those sensations. If we know the nature of the mind like this, then we let go, just like letting the water flow by. Vichara becomes more and more subtle. Perhaps the mind inclines to contemplating the body, or death, for instance, or some other theme of Dhamma. When the theme of contemplation is right, there will arise a feeling of well-being. What is that well-being? It's piti, rapture. Piti, or well-being, arises. It may manifest as goose pimples, or coolness, or lightness. The mind is enwrapped. This is called piti. There is also pleasure, sukha, the coming and going of various sensations, and the state of ekaggata ramana, or one-pointedness. Now, if we talk in terms of the first stage of concentration, it must be like this: vitaka, vichara, piti, sukha, ekaggata. So, what is the second like? As the mind becomes progressively more subtle, vitaka and vichara become comparatively coarser, so that they are discarded, leaving only piti, sukha, and ekaggata. This is something that the mind does of itself. We don't have to conjecture about it. We just know things as they are. As the mind becomes more refined, piti is eventually thrown off, leaving only sukha and ekaggata, and so we take note of that. Where does piti go to? It doesn't go anywhere. It's just that the mind becomes increasingly more subtle, so that it throws off those qualities that are too coarse for it.
Whatever is too coarse, it throws out. And it keeps throwing off like this until it reaches the peak of subtlety, known in the books as the fourth jhana, the highest level of absorption. Here the mind has progressively discarded whatever becomes too coarse for it, until only ekaggata and upekkha, equanimity, remain. There's nothing further. This is the limit. When the mind is developing the stages of samadhi, it must proceed in this way. But please, let's understand the basis of practice. We want to make the mind still, but it won't be still. This is practicing out of desire, but we don't realize it. We have desire for calm. The mind is already disturbed, and then we disturb it further by wanting to make it calm. This very wanting is the cause. We don't see that this wanting to calm the mind is tanha. It's just like increasing the burden. The more we desire calm, the more disturbed the mind becomes, until we just give up. We end up fighting all the time, sitting and struggling with ourselves. Why is this? Because we don't reflect back on how we've set up the mind. Know that the conditions of mind are simply the way they are. Whatever arises, just observe it. It's simply the nature of the mind. It isn't harmful unless we don't understand its nature. It's not dangerous if we see its activity for what it is. So we practice with vitakka and vichara until the mind begins to settle down and becomes less forceful. When sensations arise, we contemplate them. We mingle with them and come to know them. However, usually we tend to start fighting with them, because right from the beginning we're determined to calm the mind. As soon as we sit, the thoughts come to bother us. As soon as we set up our meditation object, our attention wanders. The mind wanders off, following all the thoughts, thinking that those thoughts have come to disturb us. But actually, the problem arises right here, from the very wanting to calm the mind. If we see that the mind is simply behaving according to its nature, that it naturally comes and goes like this, and if we don't get over-interested in it, we can understand that its ways are much the same as a child. Children don't know any better. They may say all kinds of things. If we understand them, we just let them talk, because children naturally talk like that. When we let go like this, we're not obsessed with the child. We can talk to our guests undisturbed, while the child chatters and plays around. The mind is like this. It's not harmful unless we grab onto it and get obsessed over it. That's the real cause of the trouble. When piti arises, one feels an indescribable pleasure, which only those who experience it can appreciate. Sukha arises, and there is also the quality of one-pointedness. There is vitakka, vichara, piti, sukha, and ekaggata. These 5 qualities all converge at one place. Even though they are different qualities, they are all collected in one place, and we can see them all there, just like seeing many different kinds of fruit in one bowl. Vitakka, vichara, piti, sukha, and ekaggata. We can see them all in one mind, all 5 qualities. If one were to ask, how is there vitakka, how is there vichara, how is there piti and sukha? It will be difficult to answer, but when they converge in the mind, we will see how it is for ourselves. At this point, our practice becomes somewhat special. We must have recollection and self-awareness and not lose ourselves. Know things for what they are. These are stages of meditation, the potential of the mind. Don't doubt anything with regard to the practice. Even if you sink into the earth or fly into the air, or even die while sitting, don't doubt it. Whatever the qualities of the mind are, just stay with the knowing. This is our foundation. Sati, recollection, and sampajanya, self-awareness. Whether standing, walking, sitting, or reclining. Whatever arises, just leave it be. Don't cling to it. Whether it's like or dislike, happiness or suffering, doubt or certainty, contemplate with vichara and engage the results of those qualities. Don't try to label everything, just know it. See that all the things that arise in the mind are simply sensations. They are transient. They arise, exist, and cease. That's all there is to them. They have no self or being. They are neither us nor them.
None of them are worthy of clinging to. When we see all Rupa and Nama in this way with wisdom, then we will see the old tracks. We will see the transience of the mind, the transience of the body, the transience of happiness, suffering, love and hate. They are all impermanent. Seeing this, the mind becomes weary of the body and mind, weary of the things that arise and cease in their transience. When the mind becomes disenchanted, it will look for a way out of all those things. It no longer wants to be stuck in things. It sees the inadequacy of this world and the inadequacy of birth. When the mind sees like this, wherever we go, we see anicca, transience, dukkha, imperfection, and anatta, ownerlessness. There's nothing left to hold on to. Whether we sit at the foot of a tree or a mountaintop or in a valley, we can hear the Buddha's teaching. All trees will seem as one. All beings will be as one. There's nothing special about any of them. They arise, exist for a while, age, and then die. All of them. We thus see the world more clearly. We see this body and mind more clearly. They are clearer in the light of transience, clearer in the light of imperfection, and clearer in the light of ownerlessness. If people hold fast to things, they suffer. This is how suffering arises. If we see that body and mind are simply the way they are, no suffering arises, because we don't hold fast to them. Wherever we go, we will have wisdom. Even when seeing a tree, we can consider it with wisdom. Seeing grass and the various insects will be food for reflection. When it all comes down to it, they all fall into the same boat. They are all Dhamma. They are invariably transient. This is the truth. This is the true Dhamma. This is certain. How is it certain? It is certain that in the world, it is certain in that the world is that way and can never be otherwise. There's nothing more to it than that. If we can see this in this way, we've finished our journey. In Buddhism, with regard to view, it's said that to feel that we are more foolish than others is not right. To feel that we are equal to others is not right. And to feel that we are better than others is not right. Because there isn't any we. This is how it is. We must uproot conceit. This is called lokaviddu, knowing the world clearly as it is. If we thus see the truth, the mind will know itself completely and will sever the cause of suffering. When there is no longer any cause, the results cannot arise. This is the way our practice should proceed. The basics which we need to develop are, firstly, to be upright and honest. Secondly, to be wary of wrongdoing. Thirdly, to have the attribute of humility within our heart. To be aloof and content with little. If we are content with little, in regards to speech and all other things, we will see ourselves. We won't be drawn into distractions. The mind will have a foundation of sila, samadhi and panya. Therefore, practitioners of the path should not be careless. Even if you're right, don't be careless. And if you're wrong, don't be careless. If things are going well or you're feeling happy, don't be careless. Why do I say don't be careless? Because all of these things are uncertain. Note them as such. If you get peaceful, just leave the peace be. You may really want to indulge in it, but you should simply know the truth of it. The same as for unpleasant qualities. This practice of the mind is up to each individual. The teacher only explains the way to train the mind. Because that mind is within each individual. We know what's in there. Nobody else can know our mind as well as we can. The practice requires this kind of honesty. Do it properly. Don't do it half-heartedly. When I say do it properly, does that mean that you have to exhaust yourselves? No, you don't have to exhaust yourselves, because the practice is done in the mind. If you know this, you will know the practice. You don't need a whole lot. Just use the standards of practice to reflect on yourself inwardly. Now the rains retreat is halfway over. For most people it's normal to let the practice slacken off after a while. They aren't consistent from beginning to end. This shows that their practice is not yet mature.
For instance, having determined a particular practice at the beginning of the retreat, whatever it may be, then we must fulfill that resolution. For these 3 months, make the practice constant, make it consistent. You must all try. Whatever you have determined to practice, consider that and reflect whether the practice has slackened off. If so, make an effort to re-establish it. Keep shaping up the practice, just the same as when we practice meditation on the breath. As the breath goes in and out, the mind gets distracted. Then re-establish your attention on the breath. When your attention wanders off again, bring it back once more. This is the same. In regard to both the body and the mind, the practice proceeds like this. Please make an effort with it. This is the आज की देशना का अनुवाद करते हैं हिंदी में। आज के टॉक का टाइटल था डिटैचमेंट विद इन एक्टिविटी, मतलब काम करते हुए भी कैसे डिटैचमेंट होता है। तो शुरू किया आजान ने कि भगवान बुद्ध की बड़े भारी हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, किस तरह से उन्होंने कुशल उपाय निकाले ताकि जो मैं का भाव है वो समाप्त हो सके। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं, क्योंकि केवल समझने से बुद्धि के तौर पे धर्म जो है हम धारण नहीं कर पाते, और केवल धर्म सुनने से काम नहीं चलता। जो भगवान ने चीज़ें धर्म सिखाया उसमें कई सारी सीखें सिखाई गई। कुछ जो शरीर के बारे में उपयुक्त हैं, कुछ जो हमारी वाणी के बारे में उपयुक्त है, और कुछ हमारे मन के बारे में उपयुक्त है। लेकिन जो भी वो कहते हैं उसको हमको ऐसे ही विश्वास करना नहीं चाहिए, हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो उन्होंने उदाहरण दिया एक दृष्टांत का जो काफ़ी फेमस है कि भगवान प्रवचन दे रहे थे और सारे बुद्ध नीचे बैठे हुए सुन रहे थे। तो प्रवचन के बाद उन्होंने पूछा सारे बुद्ध से कि तुम ये विश्वास करते हो मेरी बात पे? तो सारे बुद्ध ने कहा नहीं, भगवान अभी नहीं करता। तो भगवान ने उसको बहुत प्रशंसा की, कहा कि सचमुच जो समझदार आदमी है वो कभी भी बात को सिर्फ सुनने पे एक्सेप्ट नहीं करता, उसको पहले रिफ्लेक्ट करेगा, कंसिडर करेगा, तभी जाके एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा बोलना भगवान को अच्छा लगा, उनको रूल ये नहीं लगा कि सारे बुद्ध आदर नहीं कर रहे या निरादर कर रहे हैं। फिर उदाहरण दिया दिगांकु ब्राह्मण का, जो सूत्र में आता है कि वो इच्छा दृष्टि उसकी बड़ी स्ट्रांग थी और वो गया था कि इस विचार से कि मैं भगवान बुद्ध को हराऊंगा वार्तालाप में और शायद अपना शिष्य उनको बनाऊंगा। तो जो चर्चा हुई तो उसने शुरू किया कि मेरा ये विचार है कि कुछ भी चीज़ मुझे सूट नहीं करती है। तो भगवान ने से कहा कि तुम्हारा जो ये विचार है ना, ये भी तुम्हें सूट नहीं कर रहा है। तो ब्राह्मण हतप्रभ हो गया कि अब क्या कहूँ मैं। तो लेकिन वो समझदार था तो तुरंत ही वो समझ गया
कि वो मिथ्या दृष्टि में फंसा हुआ है और फिर भगवान की शिक्षा को समझ गया और अंततः श्रोतापत्ति फल को प्राप्त किया। और जिस तरह से उसने उद्गार कहे कि मेरा मन जो है अंधेरे में घूम रहा था, आपने लाइट जला दी, आप मेरा मन ऐसा ही था जैसे कि उल्टा हुआ घड़ा हो और आपने उसको सीधा कर दिया। तो ये सामान्य डिस्क्रिप्शन कई सूत्रों में आता है। तो उसका तात्पर्य यही था कि जो मिथ्या दृष्टि थी वो हट गई और राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो इन उदाहरण से अजान ने ये कहा, जो भिक्षु सुन रहे थे उनको कहा कि इसका से ही समझना चाहिए कि हमको ठीक से प्रैक्टिस करनी चाहिए और समझदारी से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मन में प्रज्ञा जागे। और उसका एक तरीका यही है कि जो बुद्धों का है घोष वो बार बार कहते हैं करने को, बुद्धों को मंत्र का, उसका तात्पर्य है कि उसके साथ तादात्म्य करो जो, क्योंकि हमारी जानने की शक्ति है। शुरू शुरू में जब साधना करते हैं तो ये भाव काफ़ी कमज़ोर होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ता जाएगा और आप अधिकतर समय जानकारी में रहेगा रादर देन क्या जाना जा रहा है और उसमें उलझे रहें। तो वो कहा उन्होंने कि भगवान ने जो हमें सिखाया वो ये कि अपने भीतर कैसे देखें। औपनेयी को धर्म की व्याख्या की जाती है। बाहर की चीज़ों का भी अंदर इन्फ्लुएंस होता है, वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या हो रहा है उसको देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने इनकरेजमेंट के लिए कहा कि जब भगवान बोधिसत्व जब महल छोड़ के गए थे तब उनको भी क्लियर नहीं था कि क्या करना है। कई टीचर्स के पास गए, अलार कलाम के पास गए, बुद्ध राम बुद्ध के पास गए, तो उन्होंने बहुत ऊंची समाधियाँ का अभ्यास किया, लेकिन देखा कि अभी भी अनुशय क्लेश हैं और प्रज्ञा नहीं जागी है, पुरानी बातें फिर याद आने लगी। तो इसलिए उन्होंने आचार्यों को छोड़ के दूसरा मार्ग ढूंढने की कोशिश की, बहुत कठोर तपस्याएं की, लेकिन धीरे धीरे सब बाद में समझ में आ गया कि तपस्या करके शरीर को कष्ट देना कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि मुक्ति का संबंध शरीर से नहीं मन से है। तो इसलिए हमें मन पे काम करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि यही सब बुद्ध अंततः सीखते हैं अपने अभ्यास के लिए और फिर उस तरह की शिक्षा देते हैं। और फिर जब जानते हैं, जब मन से काम करना शुरू करते हैं तो समझ जाते हैं कि दोनों ही शरीर और मन दोनों ही अनित्य हैं, दुख हैं, अनात्म हैं। परिस्थितियों के कारण चीज़ें उठती हैं, चीज़ें निकल जाती हैं, रहती हैं और फिर चली जाती हैं। यहाँ कोई है नहीं जो उनको देख कर उनके ऊपर आधिपत्य है। सुख आता है वो दुख में धीरे धीरे बदल जाता है, दुख आता है वो सुख में बदल जाता है, हमेशा बदलते ही रहती हैं चीज़ें। दिक्कत ये होती है कि जो चीज़ें उदय होती हैं उसको भी हम हम अपने को मानते हैं, जो व्यय होती हैं उसको भी हम अपनी मानते हैं। गुस्सा आया तो उसका उदय हुआ तो अपने को माना कि ये मेरा गुस्सा है, समाप्त हुआ तो माना कि मेरा गुस्सा समाप्त हो गया। तो ऐसी मानते रहेगी तो कभी मुक्त नहीं हो पाए, ना आगे बढ़ नहीं पाते। और सिर्फ सुख आता है तो सोचते हैं कि अभी वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये सब अज्ञान की बात है। ये ऐसी बात हो गई कि जैसे एक डैम बनाया और उसमें कोई जगह नहीं रखी कि पानी ओवरफ्लो करने के लिए जगह नहीं रखी, और ऐसा रखेंगे तो वो फट ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम कहें कि सुखी रहे और वो
बदले ना तो ऐसी बात हो जाएगी। फिर आचार्य ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बात कही कि हमको देखना चाहिए कि नाम रूप जो है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं वो प्रकृति का भाग है, क्योंकि प्रथम आर्य सत्य में बताया जाता है कि नाम संकेतेन पंच उपादान खंदा दुखा, तो शायद इस कारण से वो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करा रहे थे। तो हमको समझना चाहिए कि हम शरीर और मन पे हमारा पूरा आधिपत्य नहीं है और वो उसको जैसा हम चाहें वैसा कर नहीं सकते। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इस भाव से करते हैं कुछ उपलब्ध करना है, कुछ अटेन करना है, कुछ अचीव करना है। लेकिन अगर उसको छोड़ेंगे नहीं इस भाव को तो फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगी साधना में। तो बताने लगे एक डिसाइपल के बारे में कि उसको साधना में बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं उसको धीरे धीरे गाइड करता रहा। अल्टीमेटली उसको जो चाहता था कि शांति आ जाए, शांति महसूस होने लगी। और फिर कुछ दिन बाद आया कि अच्छा अब मैं क्या करूं, तो फिर उसको वही डाउट होने लग गए। तो बताया कि हमको काम जो है डिटैचमेंट के साथ करना चाहिए। कुछ अटेन करने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से दिक्कत होती है। फिर वो समाधि का चर्चा करने लगे कि समाधि में वितर्क और विचार, मतलब आपका जो आलम्बन है समाधि का, उसको पहले उसकी तरफ एप्लीकेशन करते हैं टुवर्ड्स इट, मतलब उसको ध्यान देते हैं। जैसे सांस का ध्यान करना है तो सांस हमारा आलम्बन है, तो अप्लाई योर अटेंशन टू दैट, और फिर वितर्क हो गया वो। और फिर विचार का मतलब निरंतरता से उसी के ऊपर मन टिका रहा और क्या हो रहा है उसको धर्म के अनुसार जान रहे हैं। कैसे वेदना हो रही है, क्या हो रहा है, मन लंबा है, छोटा है, तो वो विचार के अंदर आएगा। अब कोई ज़्यादा अगर अटैचमेंट होती है इस रिजल्ट्स के प्रति तो यही सोचता रहता है, अच्छा इतनी देर हो गई, मन मेरा वांडर कर रहा है, अभी भी भटक रहा है, क्यों नहीं शांत, क्यों नहीं हो रहा। तो जब इस तरह के विचार रखेंगे तो कभी वो शांत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे तो दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमको समझदारी से देखना चाहिए कि मन जैसा है वैसा है, मन का भटकना उसका स्वभाव है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कुशल उपाय की ज़रूरत है। विचार जो है, जो कुछ भी होता है उसको समझने के लिए, और जब देखें कि विचार हमारा विचार करने की जो फैक्टर है वो वीक हो गया, मन ज़्यादा भटक रहा है, तो फिर वितर्क पे आ जाए, फिर जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी ओर ध्यान दें लगातार, ताकि फिर समाधि पुष्ट होनी शुरू हो। हमारे दुख का कारण यही रहता है अधिकतर कि सब लोग चाहते हैं कि मन हमारा शांत रहे, मन बेचैन ना हो, जबकि उसका तरीका यह है प्रैक्टिस का कि हमको वो जो अटैचमेंट है, वो जो चाह है, उसको त्याग करना है। तो जब ऐसा करेंगे तभी एक्टिविटी के बीचों बीच भी हम डिटैच रहेंगे, तब सचमुच में हमारा शांत चित्त हमेशा शांत रहेगा। और जब हमारा ध्यान ठीक होता है वितर्क से विचार, तो फिर कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो फिर प्रीति जागती है और एक अच्छा महसूस होता है शरीर को, और फिर प्रीति के साथ सुख और एकाग्रता भी जागती है। तो जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कि हमारा प्रथा ज्ञान संपन्न हुआ। फिर आगे इसी तरह से करते करते जाते हैं तो वितर्क विचार छूट जाते हैं, और फिर दूसरा ध्यान, फिर प्रीति भी छूट जाती है तो तीसरा दान, फिर सुख भी छूट जाता है, सिर्फ एकाग्रता और उपेक्षा भाव, तो चौथा दान, जो कि रूप ध्यान की अंतिम स्थिति मानी जाती है। लेकिन अगर हम इसको भी, साधना को भी, इस ध्यान की कोशिश भी एक शांति की तृष्णा, कुछ अचीव करने की तृष्णा से रहेंगे, तो कभी भी मन में डिस्टर्बेंस करेगा, और वो डिस्टर्ब करेगा तो ध्यान लगेंगे नहीं, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे। सारी बात ये है कि जो कुछ भी अराइज हो रहा है उसको जस्ट देखना है। वो कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ खतरनाक नहीं है, कैसा भी विचार हो, किस तरह के भी वेदना हो, कोई भी हमारे लिए खतरनाक नहीं है।
यदि हम उसके साथ चिपके नहीं। अगर चिपकेंगे तो ज़रूर परेशानी होगी, दुख बढ़ेगा। कोई संवेदना जागती है, कोई मन में फीलिंग जागती है और हम उससे झगड़ा करने लगते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ना हो, मैं तो इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो गया। तो हम धर्मानुकूल साधना नहीं कर सकते। मन जो है वो एक, और उन्होंने कहा कि डोंट गेट टू मच इंटरेस्टेड इन माइंड। मन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको स्वभाव जानने की ज़रूरत है कि अनित्य है, बदलता रहता है। और अगर हम इसको चिपकेंगे नहीं तो हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी, कैसा भी विचार आ जाए कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये फिर वही प्रीति सुख एकाग्रता की बात कर रहे हैं कि वो सब इकट्ठे मन में प्रेजेंट रहते हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि जो कहीं बाहर से आते हैं। कुछ भी मन में अराइज हो, कुछ भी कैसी परिस्थिति हो, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सिर्फ जानकारी वाले, जानने वाले के साथ लगे रहें, अपने को जानकारी की भाव से देखते रहें, उनमें उलझे ना, जो कुछ भी है ना उसको पसंद करें ना नापसंद, और कोई चीज़ ऐसी उदय हुई है जो पसंद नहीं है या पसंद है, तो दोनों स्थिति में उसको पकड़े ना। कोई डाउट जाग रहा है तो उसको भी पकड़े ना, कोई द्वेष जाग रहा है उसको भी ना पकड़े। तो इस प्रकार से कोई हमें नुकसान नहीं होगा। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमको लगता है कि बहुत द्वेष जाग रहा है, बहुत राग जाग रहा है तो नुकसान हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। कहते हैं जब तक अगर आप उसको ग्रैस्प नहीं करेंगे तो कुछ परेशानी नहीं होगी। जो नाम रूप है उस सबको प्रज्ञा के हिसाब से देखना चाहिए कि अनित्य है, दुख है, अनात्म है। और जब हम उसको इस तरह से काफ़ी गहराई से देख पाते हैं तो सचमुच में इनके प्रति निर्वेद भाव जागता है कि इनके प्रति जो हमारा नैसर्गिक आकर्षण है वो टूटने लगता है। पर मन जो है इन सब चीज़ों में उलझने की कोशिश नहीं करता, उसको अनित्य दुख अनात्म सब तरफ दिखने लगते हैं। तो ये भगवान की टीचिंग का महत्वपूर्ण बात है। और वो चाहे जंगल में हो, चाहे पेड़ों में हो, चाहे पर्वतों में है, उसको हर तरफ यही बात समझ में आती है कि ये भी अनित्य है, ये भी दुख है, ये भी अनात्म है। तो शरीर और मन को भी इसी नज़रिए से स्पष्ट देखने से साधना में प्रगति होती है और दुख मुक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। अगर हम उनको पकड़ के रखेंगे, शरीर को या मन के अंदर होने वाली गतिविधियों को, तो दुख ही जागेगा। ये विचार करना कि मैं किसी से अच्छा हूँ, किसी से बुरा हूँ या उस जैसा हूँ, तीनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि उन सब में मैं का भाव छुपा हुआ है। पर बताया कि भगवान ने जो साधना के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि हमको वजू होना चाहिए, सीधा अपराइट होना चाहिए, शील पुष्ट होने चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, और एक ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए और कंटेंटमेंट, संतोष रहना चाहिए। तो साधना में हम आगे प्रगति कर सकते हैं। और अंत में कि केयरलेस ना हो, मतलब सजग रहें, प्रमाद में न रहें। ये समझें कि जो कुछ भी जागता है वो अनित्य है और अनिश्चित है, उसके साथ हमको इंडल्ज करने की कोशिश करना दुख का आवाहन करने के जैसा है। और प्रैक्टिस जो है, भगवान जो है उनके बारे में बता रहे हैं कि हम लोग टीचर जो हैं वो आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। हम टीचर आपको आपका मन नहीं देख सकता, आपको अपना मन देख के उसको सुधारना है और उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। तो शायद वर्षावास के दौरान बोल रहे होंगे, तो वो बोल रहे हैं कि अब वर्षावास आधा ख़त्म हो चुका है। कई लोग सोचते हैं कि बहुत हो गया और अब रिलैक्स करते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रैक्टिस हमारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और जब भी देखें कि मन ढुलमुल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो फिर दोबारा से उसको रीएस्टैब्लिश करें, फिर विचार करें, आनापान में लगाएं, मन को अपलिफ्ट करें और फिर उसी तन्मयता से आगे काम करते रहें।
थोड़ी देर पुण्यानुसति का अभ्यास करेंगे। पुण्यानुसति अर्थात अपने पुण्यों को रिकलेक्ट करना, याद करना, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, मन को अपलिफ्ट करने के लिए, खास तौर पर जब बहुत परिस्थितियाँ विषम हों और मन अवसाद में जा रहा है, डिप्रेसिंग टेंडेंसीज हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी है। जैसे आजकल परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि चारों तरफ बहुत बीमारी का प्रकोप, बीमारी का भय, मृत्यु का भय, और लाखों लोगों को प्रियजनों के विछोह का दुख। तो ऐसी परिस्थिति में उनको सुनते हैं, उनके बारे में सूचना आती है तो मन बहुत घबरा जाता है कि हमारा क्या होगा, भविष्य क्या होगा, मर गए तो क्या होगा। तो पुण्यानुसति उन सब के लिए काफ़ी लाभदायक। कर्म सिद्धांत के अनुसार से अगर हमने पुण्य काम किए हैं तो उसका फल अच्छा ही आएगा। तो इसलिए पुण्यानुसति का एक उद्देश्य ये कि हमें कॉन्फिडेंस हो कि हमने पुण्य किए हैं और उससे हमारा भविष्य अच्छा ही होगा। धम्मो हवे रखते धम्मचारी, हमने धर्म का पालन किया है तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो उस सेंस में अपने कन्वेंशनल लेवल पे समुच्चय सच के रूप में भी और परमार्थ सच के रूप में भी, दोनों ही तरह से हमारी धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो कॉन्फिडेंस आता है, ब्लाइंड कॉन्फिडेंस नहीं, बट समझदारी का कॉन्फिडेंस कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें उनका फल, कुशल फल ही मिलेगा। तो स्क्रिप्चरली पुण्यानुसति के दो भाग बताए जाते हैं, शीलानुसति और त्यागानुसति। शीलों का बहुत भारी महत्व, बहुत महत्वपूर्ण पारमी है। तो शील का जितना हम कड़ाई से पालन करते हैं उतना मन संतोष रहता है और किसी बात का रिमोर्स नहीं रहता। जो उद्दच्च कुकुच्च जो मन का डिफाइलमेंट है, निवरण है, वो नहीं रहता, क्योंकि हमने सब शील का पालन किया है। अधिकतर रिमोर्स शील को टूटने के कारण ही होता है। तो शीलानुसति एक एक करके हम शीलों को याद करते हैं और देखते हैं अपने भीतर इंट्रोस्पेक्शन करके कि क्या हमने सब शील ठीक से पालन किए हैं। और अगर कहीं कुछ कमी नज़र आती है तो उसका ये भी लाभ है कि हम मन को सुदृढ़ बनाते हैं कि चल अब इसमें और ध्यान रखेंगे ताकि शीलों का और कड़ाई से पालन हो सके, हमारे शील विशुद्धि हो। कि त्रिविध शील विशुद्धि की बात कही जाती है कि ना हम खुद शील तोड़ेंगे, न किसी को शील तोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, और ना ही कोई शील तोड़ रहा है तो उसका अनुमोदन करेंगे। तो इस प्रकार त्रिविध शुद्धि हम शीलों की कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं शीलों का जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ता हूँ और फिर हम अपने मन में शांति से इंट्रोस्पेक्शन करके देखते हैं। हाँ, इतने समय में, इतने वर्षों से हमने इतने शीलों का कड़ाई से पालन किया, एक कभी कभी कुछ कमी रह गई तो बहुत कमी रह गई, अधिकतर तो पालन किया। तो इस तरह से मन को संतोष करते हैं, मन में प्रसन्नता आती है। पानातिपाता वीरमणि, प्राणियों की हत्या से विरमन रहे हम, किसी प्राणी की कोई हत्या नहीं की। तो ये प्रथम शील का खूब कड़ाई से पालन किया है। जानबूझ के किसी को हत्या करने का कभी मन में विचार नहीं आया, चाहे वो इंसेक्ट ही क्यों ना हो, चींटी ही क्यों ना हो।
अदिन्ना दाना वेरमणि, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं ग्रैब की जो हमें राइटफुली हमारी नहीं है, जो हमने अपने उद्यम से नहीं प्राप्त की। ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं ली, कोई चोरी नहीं की, कोई रिश्वत नहीं ली, कोई टैक्स की चोरी नहीं की। तो अदिन्ना दाना वेरमणि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, कोई व्यभिचार नहीं किया, पर पुरुष पर स्त्री के साथ कभी संबंध नहीं बनाए। तो फिर मूसावादा वेरमणि, पिसुनाय वाचा वेरमणि, परुसाय वाचा वेरमणि, संफलाप्पा वेरमणि, किसी को ठगने के लिए कभी झूठ नहीं बोला, किसी की निंदा नहीं की पीठ पीछे उसके, कभी किसी को दुख पहुंचाने के लिए कड़वी बात नहीं की, और अपना समय व्यर्थ गप्पों में नहीं लगाया। तो इसको भी इन्वेस्टिगेट करके, इंट्रोस्पेक्शन करके देख सकते हैं कितना हमने पालन किया, कितना नहीं कर पाए। और अंतिम सुरा मेरय मध्य पवादट्ठाना वेरमणि, किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया, और जो स्थान प्रमादों उत्पन्न करते हैं वहाँ उन स्थानों पर नहीं गए। जुए का अड्डा, शराब पीने का अड्डा, वैश्यावृत्ति के अड्डे, वहाँ कहीं नहीं गए, क्योंकि प्रमाद के स्थान है। तो मन में प्रमोद जागता है कि हाँ, पांचों शीलों का काफ़ी कड़ाई से 100% नहीं तो 99%, 95% हमने पूरा पालन किया है, और जहाँ जहाँ कमी है उसको और कोशिश करेंगे उस लीक को बंद करने की। तो ये रिकलेक्ट करके, अपने पुण्यों को याद करके मन में प्रसन्नता जागती है, संतोष जागता है, प्रेरणा जागती है भविष्य में और सुधारने की, और विश्वास जागता है कि इस पुण्यों के आधार पे हमारा मंगल ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, मर जाए, उसके बाद भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और पुण्यानुसति का दूसरा भाग त्यागानुसति, कि जो हमने त्याग किए उनको याद करना, वस्तुओं का त्याग, धन का त्याग, भोजन का त्याग, समय का दान, अपने मेहनत का दान। तो जो भी चीज़ें हमने दान दी हैं, चाहे वो गरीबों को दी हों, बीमारों को दी हों, या भिक्षुओं को दी हों, या धर्म दान में सहायता के रूप में दी हों, लोगों को धर्म सिखाने में समय दिया हो, जो लोग धर्म सिखा रहे हैं उसमें मदद करके समय दिया हो, उसमें अपना एफर्ट दिया हो, वो सब विभिन्न प्रकार के दान, उनको याद करके मन में संतोष जाग सकता है। सचमुच हमने निष्क्रमण पावनी को बढ़ाया है। कुछ हद तक निष्क्रमण बाहर जाके घर से, और कुछ हद तक रिनंसिएशन इन ए जनरल सेंस। भगवान भी कहते हैं दानशील भावना का रूप है। तो इस प्रकार अपने शीलों को याद करके, अपने त्याग को याद करके, दान को याद करके मन में प्रसन्नता जागती है, विश्वास जागता है कि हमारा भला ही होगा, चाहे कुछ भी विषम परिस्थिति हो, कुछ भी अनहोनी हो जाए, तब भी अगला जीवन अच्छा ही होगा। और फिर हम
अपने पुण्यों को साझा करते हैं दूसरों के साथ, कि सबका हमारे पुण्यों में सभी लोग भागीदार हों। और आजकल की परिस्थिति में खास तौर पर जो लोग इस विषम परिस्थिति में सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर लोग, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, स्वयंसेवी संस्थाएं जो लोगों को भोजन दिला रही हैं, पुलिसमैन, उन सबके भी पुण्य साझा करने में विशेष रूप से उनको सम्मिलित करते हैं। तो जो हमारी पुण्य समर्पण की गाथाएं हैं उसका चांट कर लेते हैं देना। मैं पहले पाली में चांट कर देता हूँ, फिर मैडम उसको हिंदी में अनुवाद कर देंगे। पुण्यों को याद करके उनको समर्पित करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो आत्मभाव ही पुष्ट होता है और अहंकार जागने की संभावना रहती है। क्योंकि ये जो पुण्य हम कर पाए वो परिस्थितियों के कारण ही कर पाए। न जाने कितने लोगों ने सहायता की तभी हम कुछ पुण्य के काम कर पाए, कितने लोगों ने हमें समझाया तो शीलों का पालन कर पाए, परिस्थितियाँ ऐसी रहीं तो दान कर पाए, कितने लोगों के सहयोग के कारण शिविरों में जा पाए, कितने लोगों के सहयोग के कारण थाईलैंड जा पाए, ध्यान कर पाए। तो सारे पुण्यों को पर्सनली ना लेके उन सब लोगों के प्रति समर्पित करना जिन्होंने हमारे को पुण्य करने में सहायता की, और सभी प्राणियों के लिए समर्पित करना ताकि सभी हमारे पुण्यों में भागीदार हों, हमारे मेरिट्स में भागीदार हों। हेमेना पुण्य कम्मेन उपज्जाया गुणोत्तरा आचर्योपकारा च माता पिता च ज्ञातका सूर्यो चंदी महाराजा गुणवंता नरापि च ब्रह्म मारा च इंदा च लोकपाला च देवता यमो मित्ता मनुस्सा च मज्जता वेरिकापि च सब्बे सत्ता सुखी होन्तु पुण्यानि पकतानि मे सुखं च त्रिविधं देन्तु क्षिप्तं पापेथवो मतं इमिना पुण्यकम्मेन इमिना उद्दिश्येन च क्षिप्पाहं सुलभे चैव तन्हुपादानच्छेदनं ये सन्ताने हि ना धम्मा यावनिब्बानतो मम न सन्तु सर्वदा एव यत्थ जातो भवे भवे उजुचित्तं सती पन्या सल्लेखो वीर्यं हिना मारालभन्तु नौकासं कातुं च वीर्येषु मे बुद्धादिपवरो नाथो धम्मो नाथो वरुत्तमो नाथोपच्चेकबुद्धो च संघो नाथोत्तरो मम तेषोत्तमानुभावेन मारोकासं लभन्तु मा। आइए हम सब अपने पुण्य समर्पित करने की संकल्प की गाथा का पाठ करें। मेरे इन पुण्यों से
मेरे गुणवान उपाध्याय, मेरे उपकारी आचार्य, माता पिता एवं संबंधी, सूर्य, चंद्रमा एवं गुणवान नर तथा राजा, ब्रह्मा, मार, इंद्र तथा लोकपाल देवता, यम, सभी मनुष्य चाहे मित्र हों, वैरी हों अथवा तटस्थ, सभी प्राणी मेरे किए गए पुण्यों से सुखी हों। वे इन्हें त्रिविध सुख दें तथा शीघ्र अमृत पद को प्राप्त करें। इन पुण्य कर्मों एवं इस समर्पण से तृष्णा एवं आसक्ति का शीघ्र भेदन सुलभ हो, और जब तक निर्वाण का साक्षात्कार हो, मन की अहितकर अवस्थाओं का हर पुनर्जन्म में नाश हो। सती एवं प्रज्ञा, तप एवं वीर्य से युक्त मेरे सरल चित्त में मार को वीर्य कमजोर करने का अवसर न मिले। बुद्ध मेरे उत्तम नाथ हैं, धम्म मेरा श्रेष्ठ नाथ है, प्रत्येक बुद्ध मेरे नाथ हैं तथा संघ मेरा श्रेष्ठ नाथ है। इन सब के उत्तम प्रभाव से मार की शक्तियों को कोई अवसर न मिले। साध साध साध। 2 मिनट शांति से बैठते, इन भावों को शरीर में व्याप्त होने देते, फिर समापन करेंगे। तो सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि।
भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि